Often during our corporate trainings, we are taught topics like how to communicate effectively in a formal or an informal setup. But what we are not taught is that what not to communicate, which I believe is extremely important for us to learn and understand in order to really communicate effectively. Oftentimes, we miss out to understand the boundary while indulging into a small talk, especially in an informal communication, that what not to communicate. हम सब ह्यूमंस की लाइफ में ये तीन में से कोई एक प्रॉब्लम हमेशा चल ही रहा होता है, बी इट रिलेटेड टू आवर करियर फाइनेंसेस और रिलेटेड टू आवर रिलेशनशिप्स और रिलेटेड टू आवर हेल्थ, बी इट आवर हेल्थ और रिलेटेड टू आवर फैमिली मेम्बर्स हेल्थ. बट ये तीन में से कोई एक इश्यू सबकी लाइफ में चल ही रहा होता है. और अगर हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करें तो स्पेशली इन एन इनफॉर्मल सेटअप, when we are getting ourselves indulged into a small talk, we often miss out to understand this boundary and we always talk the things that we are not supposed to talk. हम काफ़ी बार लोगों को पूछते हैं कि अरे आजकल आपका काम कैसे चल रहा है, आपने नई जॉब ज्वाइन की थी ना, आपका काम कैसा चल रहा है, पैकेज कैसा है, all those things which you are not supposed to ask them. किसी की नई शादी हुई होती है तो हम लोगों को ऐसा पूछते हैं कि सो हाउ इज योर मैरिड लाइफ गोइंग ऑन, व्हाट्स अप, विच वी आर नॉट सपोज टू आस्क. थर्ड, रिलेटेड टू हेल्थ. काफ़ी बार होता है कि किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है या तो कोई फैमिली मेम्बर की हेल्थ is not fine at that moment when we are talking with that person, and we often start giving so much of advices कि अरे उनको हेल्थ इश्यू है ना, आपने ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, ये बना के दिया, वो बना के दिया. Unless we are not expert in that area and we are able to genuinely help that person in their issues, I think we should not indulge into it or casually ask about these three topics while indulging into a small talk, be it in a formal or an informal setup. But instead, what we should talk while indulging into a small talk is generic things. Things like movies, things like, politics, things like books, lots of things. There are so many generic things. कुछ भी नहीं मिला तो आप वेदर के बारे में भी बात कर सकते हो कि आजकल ठंड बहुत बढ़ गई है ना, आर यू अ टी पर्सन और अ कॉफ़ी पर्सन. यू कैन आस्क सो मैनी थिंग्स. यू कैन स्टार्ट आस्किंग. काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि अरे मुझे कैसे पता कि उसको मूवीज़ पसंद है कि नहीं. देन आस्क सच थिंग्स दैट डू यू लाइक टू वॉच मूवीज़, आजकल ये मूवी आई है, आपने वो देख ली क्या, समथिंग लाइक दैट. ऑलवेज टॉक. When you are indulging into a small talk, especially in an informal setup, always talk generic things and not things related to these three topics, which are career, relationships, and health, be it about them or a family member.